Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। हमारे साथ आज अवेलेबल है मलेशिया के इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव मिस इली हैं जो कि इंटी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनके साथ मिस्टर केविन हैं जो कि इंटी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज हमने इनवाइट किया इसी मिस्टर साद को जो हमारे मलेशिया के एडमिशन ऑफिसर हैं। तो आज हम स्पेशली डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दैट यू जॉइन अस टुडे। और इसी के साथ मैं अपने व्यूवर्स को एक चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहूँगा, वो स्टूडेंट्स जो स्पेशल मलेशिया में इंटी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं स्टडी के लिए, वो आज अपनी लाइव क्यूरीज को डिस्कस करेंगे और हम आपकी क्यूरीज का लाइव आंसर्स करेंगे रिलेटेड आइल्स, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस हो रहे हैं नहीं हो रहे, वीज़ा कब ओपन होंगे नहीं होंगे, ये तमाम चीज़ें आज हमारे आज के सेशन में डिस्कस होंगी। तो अभी कॉल कर सकते हैं आप या जूम का हम आपको लिंक शेयर करेंगे, उस पर आप लाइव अपनी कॉल शेयर कर सकते हैं या फिर लाइव कॉल कर सकते हैं 034647470043 पर आपकी लाइव कॉल्स ली जाएंगी और इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज को लाइव डिस्कस किया जाएगा। जी मिस्टर साद, नाउ ओवर टू यू, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने, कंटिन्यू। Thank you so much, Tahir, for inviting us. Dear viewers, as you all know, that HR Consultant is conducting these live sessions to keep you updated with the latest information of the universities regarding their courses, regarding their upcoming programs, regarding the scholarships, and the post-COVID plans, how they are welcoming students after this pandemic. So today we are going to discuss about INTI University. It's one of the reputed university in Malaysia, and today we have Miss Elisabeth and Mr. Kelvin with us. Thank you, Kelvin. Thank you, Eli, for taking out time for us. Kindly introduce yourself to our viewers and give us some info about INTI University. Hi everyone, my name is Kelvin Liu, and then I'm the region head for South Asia. Thank you for inviting us, INTI University and Colleges Malaysia, one of our most respected and trusted names in Malaysia's private higher education. Okay, we have been more than 30 years of empowering young minds with over 65,000 graduates to testify to the quality educations to deliver. So very happy to be here today during this pandemic moment. So, and then I understand that the result is going to be released, and hopefully if you have any questions pertaining your education's pathway, do raise your questions. We will be happy to assist from here. Thank you. Hello and Assalamualaikum everyone. मेरा नाम इली सादिक है और मैं एजुकेशन काउंसलर from INTI International University and Colleges, Malaysia. As what Kelvin has mentioned just now, we would like to thank you everyone and thanks to all our viewers today for joining the session, and hopefully towards the end of the session we will be assist you in terms of all your doubts and queries about our admissions, programs, online education, scholarships, and many more. So let me just brief all of you in a short brief about INTI International University and Colleges, Malaysia. So INTI are one of the most respected and trusted name in Malaysia's private higher education for the past 34 years. We have 6 campuses across Malaysia. We have 1 university and 5 colleges. Our university, INTI University, is located in Nilai, which is about 25 minutes away from the international airport. We have 1 college in Subang Jaya. We have 1 college in the city center of Kuala Lumpur. We have 1 college up north in beautiful island Penang, as well as we have 1 colleges in East Malaysia in Sabah. Like what Kelvin has mentioned earlier just now, we are partnering with more than 450 industries partners. This is part, over the years, INTI has a strong engagement with all these multinational companies on diverse platform to foster the innovation curriculum and develop the future-ready graduates from INTI. As well, currently in the campus, across all our 6 campuses, we have about 16,500 students, and we have 75,000 students who already graduated from INTI.
Our internationally recognized education will enrich you with the right skills and attributes to excel in whatever you do. And hence, that's why INTI has a strategic partnership with some of the leading university in the world to give all of you the edge to success. If you're talking about programs, we have about 12 verticals programs, namely one of our top programs will be business, computing and IT, arts and design, engineering, biotechnology, law, hospitality, mass communication, physiotherapy, traditional Chinese medicine, as well as pre-university. But the main of one of the programs that I would really like to highlight on is our American degree transfer program. He has been pioneer in our American degree transfer program for the past 34 years, where we are partnering with more than 357 university from US, Canada, UK, Australia, New Zealand, as well as China. And for American degree transfer program itself, we have about 66 specialization that you can specialize in. So that's a basically short introductions about INTI. And sorry, another one thing that I would like to add about INTI is that about our employability, which is one of our main focus and priority post graduation. So INTI has about 99% of our students are employed within 6 months of graduation. 91% paid higher than market average salary, as well as 60% of our graduates are employed within before they graduate. And there's a few initiatives took in order to achieve this high percentage. So yeah, basically that's a small introduction about INTI, International University and Colleges Malaysia. Over to you, Saad. यू जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं मिस एली सिद्दीकी और कैल्विन बता रहे थे कि INTI इस जो है एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है मलेशिया के अंदर और सबसे अच्छी बात होती है जब स्टूडेंट मलेशिया के लिए स्टडी के लिए अपने आप को चूज करता है ऑप्शन वो यही चीज देखता होता है कि उसकी एक्रेडिटेशंस क्या हैं आगे उसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्या पाथवे उसके पास अवेलेबल हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री प्रोग्राम करने के बाद चाहे वो फाउंडेशंस हो चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बैचलर हो तो इंटी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी एक्रेडिटेशंस 350 प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ है वर्ल्ड वाइड ठीक है और वो भी कोई लो रैंक यूनिवर्सिटीज नहीं है वो भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कहीं ना कहीं चाहे QS हो चाहे टाइम्स हो चाहे गार्जियन हो किसी ना किसी रैंकिंग के अंदर वो भी आ रही है यूनिवर्सिटीज और स्टेट रैंकिंग्स के अंदर भी अवेलेबल हैं वो यूनिवर्सिटीज जो आपको आगे पाथवे प्रोवाइड करती हैं टुवर्ड्स सेटलमेंट टुवर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि अच्छी डिग्री आपको आपको मिल सकती है और इंटी आपको वो पाथवे और वो एक ब्रिज की तरह की हैसियत प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप एक अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हैं चाहे वो इंटी में रहकर क्यों ना करें और चाहे वो आप अपने आप को ट्रांसफर करके क्यों ना करें इसी तरह उन्होंने आप जैसे बताया कि अमेरिकन डिग्री ट्रांसफर प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट एंट्री नहीं ले पाते जैसे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो गए हैं या HSC के स्टूडेंट्स हो गए हैं इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े कम ग्रेड से नहीं ले पा रहे होते एंट्री उसमें ये होता है कि आप एक पाथवे ले सकते हैं अमेरिकन डिग्री प्रोग्राम के थ्रू उसमें आपका डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर और सिर्फ आपको एक वीजा फाइल करना होता है और वहीं से अपने आप को ट्रांसफर कर सकते हैं उसमें ये कोई इसमें हर्डल स्पेस नहीं होती और दूसरा आपके वीजा के अप्रूवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यूएस के लिए क्योंकि पाकिस्तान का ज्यादातर आपको पता है कि वीजा रेशियो इतना परफेक्ट नहीं है बनस्बत बाकी सारी कंट्रीज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के तो ये आपको एक अच्छा पाथवे मिल जाता है अगर आप अमेरिका के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप एक अमेरिकन डिग्री ट्रांसफर प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं So, Ili, kindly tell our viewers about what are the programs available for the international students in INTI? Like I've mentioned just now, we have about 12 vertical programs, namely, like I've mentioned earlier, like business, computing and IT, engineering, biotechnology. We have law, arts and design, hospitality,
We also have mass communication, physiotherapy, and of course, all the pre-university programs. But again, yes, like what you have highlighted earlier, Saad, one of our core strength programs will be our American degree transfer program, where students will be able or they have a flexibility to transfer either 2 years in Malaysia and 2 years abroad, or 1 year Malaysia and 3 years abroad, or they can also do 1.5 years Malaysia and 1.5 years abroad. And the countries that I have mentioned where students can transfer, namely from USA itself, we have about 257 universities, including Ivy Leagues universities where students be able to transfer. We have about 21 university in Canada, and the remaining will be from UK, Australia, New Zealand, as well as China. Thank you so much. As we know that most of the students are willing to enroll in and we receive lots of queries regarding hospitality and tourism programs. So is there any programs available for the international students, and if they have any work placement options available with that, you can say that with the programs or with the diplomas. So it will be kindly tell our viewers about this program. I'm sorry again, Saan, I did not catch your question. Most of the queries we are receiving for the hospitality and tourism programs for the Malaysia, because we all know that Malaysia is the perfect destination for the tourism. And is there any programs INTI offering in terms of foundation and diplomas or bachelor in hospitality with placements? Yes. For our hospitality program, we start from the diploma programs. We have diploma in hotel management, we have diploma in culinary arts, and for the bachelor's program, especially for students who are coming after intermediate program or A-level, they will be able to do our collaboration program with Blue Mountains, where they will do Bachelors of Business in Hotel and Resort Management. For the program is actually a franchise program where students can opt to do 3 years in Malaysia fully, or they can do 2 years Malaysia, 1 year in Australia, or 1 year Malaysia and remaining 2 years in Australia as well. व्यूवर्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैं इटली से पूछ रहा था उस चीज़ को लेके ब्लू माउंटेन रिजॉर्ट्स एंड होटल एंड रिजॉर्ट्स एक बहुत बड़ी चेन है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जिनके वहाँ पे होटल्स भी हैं और रिजॉर्ट्स भी हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी कोलैबोरेशन हुई हुई INTI यूनिवर्सिटी के साथ और INTI यूनिवर्सिटी आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी ऑफर कर रही है और साथ में बैचलर भी ऑफर कर रही है जिसमें आप 3 साल वहाँ पढ़ के अपना आपको ट्रांसफर कर सकते हैं और एक एक्सपोजर आप ऑस्ट्रेलिया का भी ले सकते हैं और जब आपको ब्लू माउंटेन रिजॉर्ट्स का आपको एक एक्सपोजर साथ में मिल जाएगा वो आपको एक अच्छे होटल या रिजॉर्ट के अंदर या आपको एक अच्छी जॉब प्लेसमेंट आपको फ्यूचर के अंदर मिल सकती है जो एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास हमें क्यूरी प्लेस करते हैं रिगार्डिंग होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड क्योंकि हमारे पास मलेशिया को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरीज सेकंड नंबर पे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट को लेकर आती हैं तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा वो हमें डॉक्यूमेंट प्लेस कर सकते हैं एडमिशन स्टिल ओपन है तो आप हमें दें हम आपको आपकी एलिजिबिलिटी के लिहाज से आपको ऑफर लेटर इशू करेंगे और आपको उसके जो पूरा पाथवे है उसको हम पूरा डिफाइन भी कर देंगे आप विजिट भी कर सकते हैं हमारे ऑफिसेस about the Sorry, in order to add regarding our hospitality program, here in INTI itself in Subang Jaya campus, we do have, because we work closely with our industry partner, and one of it is Hilton. Well, I guess everyone knows about Hilton, where they have branches across the globe. So for here in for our hospitality students, they have an advantage where we have a replica of Hilton Hotel itself in our campus, in our university, where students will be trained directly from top management from Hilton, where they will come to meet our students and do assessments accordingly here at INTI Subang. साथ आपके सवाल से पहले जो हमारे पास कुछ क्यूरीज है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर Mr. Arif have placed an inquiry. He want to know that about last date of application in INTI University.
Last date of application, right? That's the question. All right. Our next and last intake for 2020 will be our October intake, right? So our intake will be starting in 3 weeks time. So the closing date will be in 2 weeks time from now, from today itself. So if students are unable to join our October 2020 intake, the nearest and closest will be January 2021. Usually, in normal circumstances, we will give about 1 month deadline. But due to the pandemic, because classes are mainly online classes, so we will give the deadline within 2 weeks before the intake starts. Okay. जी आरिफ, जिस तरह मसली ने गाइड किया यहाँ पर कि अक्टूबर में इनटेक आ रही है, ठीक है, उसकी जो लास्ट डेट है बिफोर टू वीक्स के अंदर आपने अप्लाई करना है। अपने जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 034647470031 पर। मिस्टर साद का ये नंबर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स फौरन से व्हाट्सएप करें और इंशाल्लाह अक्टूबर के लिए आपका अप्लाई किया जाएगा। केस आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक टू ऑनवर्ड वो आप डिटेल्स अपनी फॉरवर्ड करेंगे मिस्टर साद को। नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 034647470031 पर। तो मिस्टर साद जो है वो आपका फर्दर केस अप्लाई करेंगे। सिर्फ 2 वीक्स का टाइम है, जैसा कि आपने सुना मिस एली ने बताया, सिर्फ 2 वीक्स का टाइम है अक्टूबर इनटेक के लिए, और जो जनवरी इनटेक होती है उसमें भी 2 वीक्स का टाइम होता है, ठीक है। तो लेकिन अभी अगर आप अक्टूबर इनटेक के लिए करना चाह रहे हैं तो सिर्फ 2 वीक्स का टाइम है, तो फौरन से अप्लाई कर सकते हैं। जी साद, आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। One of the most important questions we received from the students. Is there any IELTS exemption in INTI university programs? Again, it's a case-to-case basis, and also it depending on the program. Mainly for our program in INTI University, if students coming from an English background or English medium speaking school, then they will be exempted from IELTS. But of course, when you go to our partners or franchise program or even transfer program, then they will definitely need an IELTS for that. व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज की आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें ये है कि INTI यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम्पशन प्रोवाइड करती है अगर आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। सो इसके लिए आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट प्लेस करने होंगे। इफ यू आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री विदाउट आइल्स, सो वो आपके एलिजिबिलिटी लेटर के ऊपर मेंशन हुआ होगा। अदरवाइज अगर कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो उसके अंदर आपकी आ जाएगी, आपके ऑफर लेटर के अंदर। सो इसके लिए आपको हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे, उसकी बेसिस पर हम आपको एसेस करके बता सकते हैं कि आपको आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है, और आपके पास यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी लेटर होगा। सो इसमें ये नहीं है कि आप अपने एडमिशन प्लेस कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को एसेस करवा सकते हैं जिस प्रोग्राम में भी आप इंटरेस्टेड हैं। Another most important questions about scholarships. Are there any scholarships for the international students or for, especially for Pakistani students? Yes, this is a very common question that even I receive it almost every day from students. Yes, we do have scholarship we are offering for the students. We do offer scholarship up to 45% for the first year only. But of course, again, a scholarship is not everyone will get 45%. Of course, it's a case-to-case basis depending on students' academic performance as well. So it's best for all of you, to the students, to submit your documents to Saad or HR consultant in order for us from INTI to do assessment to know what is the eligibility of scholarship that you are entitled for. जी साद, आपको आवाज आ रही है? एली, जैसे व्यूअर्स आपने देखा और सुना भी कि एली सिद्दीकी ने जैसे बताया कि अगर आप स्कॉलरशिप लेवलिंग है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं INTI यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें ये है कि आपकी परसेंटेज मैटर करती है। उसमें देखा जाएगा कि आपने 60% किया है या 70% से किया है या 80% HSC किया है, या अगर आपने A लेवल्स किया है तो स्ट्रेट A's के साथ है, ABB के साथ है। वो आपकी ग्रेडिंग क्राइटेरिया को देखते हुए आपको स्कॉलरशिप अकोमोडेट की जाएगी। उसमें ये है कि अगर एक एग्जैक्ट अमाउंट हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसमें होता है कि स्कॉलरशिप वेरीज कर रही होती है आपके ग्रेड्स के ऊपर। ज्यादातर मलेशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके ग्रेड्स एसेस करने के बाद बताती हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप आपको
अवॉइड की जाएगी। सो उसके लिए वही है कि आपको जो उसके लिए अलग से आपको कोई स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट प्लेस करनी नहीं होती। जो स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी और एज पर योर एलिजिबिलिटी होगी वो आपको ऑफर कर दी जाएगी आपके एलिजिबिलिटी लेटर के अंदर। Indeed, as we know that the right now the borders are closed for the Malaysia, and we are counseling students for the online studies, and we received some queries regarding, and we received some concerns of the students regarding online studies. How will they taught online, and what are the facilities they can avail online, or how the examination will be conducted online. So kindly tell us about the INTI, how a student can enroll online in INTI, and as you know that the previous intake will be is the online. So kindly tell our viewers about the online studies. All right. Okay. I like this question very much. Okay. So is all of you knows that in Malaysia, government has announced that our border will be closed until 31st December 2020 as of now. So all classes will be online and there will be no face-to-face classes. Yeah. So at INTI Malaysia, our students' learning actually are not affected at all because of this pandemic. Because at INTI, we have the right infrastructure and we have the right human capital to deliver our course online. And we have taught this blended learning for the past 8 years. So students at INTI are, how do I say, it's not like a culture shock for them to shift from face-to-face to online classes, because they have been practiced this for the past 8 years. For example, if the classes previously was 2 hours face-to-face and 1 hour will be online. So for new students, I do know the fear of them to having coming for online classes because they are not familiar or they're not comfortable with it. But here at INTI, we can guarantee you that our online classes or the platform that we use, which is Blackboard, is something different than what you have been used before, something like Zoom or Google Meets and everything. That's something different. At INTI, we have invested a lot on this Blackboard, where on this Blackboard itself, it has been supplemented with a dynamism of discussion where lecturers can integrate multimedia tools by creating, for example, video online, interview, blogging, vlog, infographic, and many more. And also we have a lot of tools on our Blackboard, such as like Katura, where students will be doing hypermedia presentation. And some of the lecturers here, for example, I will give for our mass communication lecturers, Mr. Roberto, he liked to use gaming. I mean, with online classes, students will be more interested if the classes is conducted in gaming type. So Mr. Roberto will always use a Kahoot as a game of interaction of his classes. So this is something interesting, and students find it's much more engaging rather than just looking a video kind of classes. So this is what the platform that we have for INTI itself. And for exams, for example, for this year, we have closed all books exam. We conducted online exam where we looking at, for example, a take-home test or maybe even an open book exam where the lecturers will conduct all the exams online. Because if you want to wait for a face-to-face exam, it's not possible, because we want to ensure that our students are able to progress or even graduate on time. And with this platform as well, our online platform, Blackboard, we have won 2 Catalyst Award for professional development as well as student success. So here at INTI, our online learning or online platform is totally different. And for new students, you wouldn't find it any difficult because our lecturers are willing to help you step by step until you get familiar with the system.
So there will be a lot of support system from your lecturers, from your head of departments, as well as from your peer that will assist you from A to Z of the process of using this online blackboard system. थैंक यू सो मच। जैसे कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि प्रीवियस कुछ मंथ से लॉकडाउन था, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो थे वो आपका स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर सके थे। वो इस वेट में थे कि जब ये पेंडेमिक खत्म होगा, जब बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी तो वो ऑन कैंपस जाके पढ़ेंगे। लेकिन बात वही आती है कि जितना आप अपने आप को गैप देंगे और आपका स्टडी गैप होगा, उसमें आपको और डिफिकल्टीज होती हैं। एक तो ये इसके आपका एक जो रूटीन के अंदर एक पढ़ने की आदत होती है वो भी थोड़ी हो जाती है, और हम उसको ये कह सकते हैं कि और टाइम अगर जितना हम देंगे उतना आपके टाइम वेस्ट होता है स्टडी गैप से। सो इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आप ऑनलाइन स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस आपकी खत्म होगी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें ये भी मसला नहीं है कि आपको कोई ग्रेड्स को लेके आपको कोई अफेक्ट करेंगे ऑनलाइन के अंदर। आपको यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर फिंगर टिप्स पे आपके साथ होते हैं अवेलेबल। जो उनकी एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसमें जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करता रहता है इंडिविजुअली। और इवन अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप उनको डायरेक्ट अपनी ईमेल कर सकते हैं। यू कैन प्लेस क्यूरीज रिगार्डिंग इफ यू हैव एनी कंसर्न इन योर ऑनलाइन स्टडीज। सो आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो उसमें ये कोई मसला नहीं है ऑनलाइन स्टडीज लेने के अंदर। उसमें ये है कि आपका एक तो गैप ईयर बचेगा, ठीक है, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और जैसे आपके बॉर्डर ओपन होंगे, और मलेशियन कॉन्सुलेट ने जो पहली चीज बोली हुई है, जो पढ़ रहे होंगे, जो ऑनलाइन इनरोल्ड होंगे, उनको पहली फेसेस के ऊपर रिलीज किया जाएगा कि वो अपने यूनिवर्सिटीज को जाके ज्वाइन कर लें बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस के बाद। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। यू कैन ऑप्ट फॉर द ऑनलाइन स्टडीज इन अक्टूबर इनटेक एंड एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। उसमें कोई इशू नहीं है, आप हमारे डॉक्यूमेंट प्लेस करें, हम आपका साइट से कराते हैं। और मलेशिया का वीजा जो है वो बहुत सिंपली है और फास्ट ट्रैक है। इसके अंदर भी कोई इशू नहीं है कि अगर आपको ये मसला हो रहा हो कि वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वीजा प्रोबेबिलिटी चांसेस को लेके आपको डाउट्स हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मलेशिया के अंदर आपको वीजा भी आसानी से अकोमोडेट होता है, तो उसमें आप प्री रिजर्व करके अपना सेमेस्टर पढ़ें। एक सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लें ऑनलाइन, और सेकंड सेमेस्टर से अपने आप को यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम और एकेडमिक प्रोफाइल। सो अपने आप को कंटिन्यू करें ऑनलाइन की तरफ, कोई इतना इशू नहीं है। अगर कोई इस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें क्यूरी प्लेस कर सकते हैं। मेरा नंबर अवेलेबल है 034647474031। अगर ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर भी ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो यू कैन scroll or browse university website as well. If you have any question, if you have any queries regarding online studies and how they work online, so आप उसको कर सकते हैं, इसको कोई इतना इशू नहीं है। Ili, kindly tell our viewers about the INTI University on-campus experience. Inshallah, when the thing is going fine, so student when travel to Malaysia and join the campus. So what is the campus life and what are the facilities available at INTI University for the international students? There's a lot of facilities at INTI. Like I mentioned earlier, our campus, we have 6 campuses, and every campuses has their own unique facilities and also different experience. So for example, like our Subang campus, this is a very city campus. So city campus feelings is different. So for example, a city campus is a high-rise building campus, but we do have facilities like, for example, our own labs, libraries, cafeteria. Even here for Subang campus, for all those mass communication students, you have proper mass comm studios. You have the hospitality suite, like I mentioned just now, and all our what we call that computer labs or Mac. We have Mac labs for all these graphic design students, engineering students. We have design studios. We have white room for our auditoriums as well. Of course, in terms of sports facilities, we'll be having more in our INTI universities, as this picture here.
So for INTI University, we have Olympic-sized swimming pool, gym, because it's a land university, it's not a high-rise building. So it's much more bigger. And in our INTI University here, it's more a university life where students are expecting from. So for students coming from Pakistan itself, the most popular campus that the student will choose is here, INTI University, as well as where am I located, which is in Subang campus. So, I mean, the basic facilities is all there. Lab, libraries, sports facilities, also for clubs and societies. We have numerous clubs or societies where students can join. And every year, usually we will do cultural nights, and lots of activities will be done here at all our campuses. And of course, for in terms of career opportunities, all these internships, employers projects, we have a specific departments in each and every university. So for me personally, if I'm a student, this is all the sufficient facilities that I'm looking at. And I don't find students from Pakistan ever has a struggle or a facilities issue here at INTI. व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं इली जैसे बताई थी मैं दिल्ली से पूछ से रहा था क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मेरे जब मैं कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा होता हूँ मेरे दिमाग में ये चीज़ होती है कि वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर होगा, क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या सोशल लाइफ होगी ऑन कैंपस। सो वो सारी चीज़ें INTI के अंदर अवेलेबल हैं। और अच्छी बात ये है कि साथ इनके जो कैंपस हैं वो मेजर सिटीज़ के अंदर मलेशिया के अंदर, और वो भी इतने ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर नहीं है, वो आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फैसिलिटीज अवेल करनी है तो INTI के जो मेन कैंपस आप उसके अंदर जाके भी सारी फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो। सिर्फ आपको स्टूडेंट पास करनी होती है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है। सो आप आपस में ब्रांचेस का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, कैंपसेस का, और आपस में इंटरेक्शन भी अच्छा है। सो स्टूडेंट्स में ये होता है कि आप अलग-अलग स्टूडेंट्स आप मिल भी सकते हैं, आपकी इंटरेक्शन भी अच्छी होती है। उसमें आपका ये होती है कि आपकी एक सोशल नेटवर्किंग, पर्सनल सोशल नेटवर्किंग भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है जब आप एक ह्यूज कैंपस के अंदर आके सारे कैंपस के लोग आके एक सोशल गैदरिंग करते हैं। सो एक अच्छा खूबसूरत कैंपस आप देख सकते हैं उसकी, और इसकी वीडियोस भी आपकी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो उसको देखें। I would like to ask a question to Mr. Kevin. He is the head of the international admissions. Kevin, I want to know about the post-COVID plans of the INTI and how INTI will accommodate international students when they came to Australia, when they came to INTI or Malaysia, and what are the facilities available to them regarding health and security issues. Sorry, can you repeat again your question? I can't hear you well. I want to ask about the post-COVID plans of the INTI University after this pandemic, when students are going and joining the university. So INTI, how welcome the students, and what are the facilities they can avail? Kevin, kindly, your mic is off. Okay, it's his side. I will be able to assist for that because I think that was like buzzing sound from Calvin's side, so he can't really hear. In terms of our post-pandemic, even now itself for the staff and the students, local students or international students who are already back in the campus, those already in Malaysia. Of course, if you see all entry from, we have about 4 entries here, but now it's becoming to 1 entry right now. That's the way in and out, where we have all the temperature checking, registrations, and as well for all classes are fully sanitized every half an hour. Even the office itself is sanitized about every half an hour. Every facilities in this campus, in all our 6 campuses, are sanitized every half an hour. The classes limit for face-to-face classes are very limited. So lecturers will have to do, instead of 1 class, they have to do 3 to 4 classes a day, because we want to limit and to maintain the social distancing in the classroom as well. And most of our common area has been marked
for some areas that students, there's a gap for social distancing. A lot of precautions that INTI has took in order to battle pandemic, as well as to ensure the safety of our students and staff well-being in the campus. And then to add in more, just for your information, just now I think we should highlight that for those who want to enter into our campus, regardless whether it's our INTI University or other campuses, the security guard is have to ensure every one of them must wear masks to come into our campus, just to ensure that no viruses will be exposed to our students, because safety is utmost importance for the INTI student as well as for the staff as well. So these are all the precautionary actions has been taken and enforced by our management in order to have a safety environment for all our students and the staff as well. थैंक यू सो मच, थैंक यू कैल्विन, थैंक यू इली। मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जो मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर कंसर्न शो करते हैं रिगार्डिंग पोस्ट कोविड प्लान्स के स्टूडेंट जब जाएंगे तो किस तरह से वहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। तो INTI के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। इवन जो अभी इनकी ऑन कैंपस क्लासेस हुई भी थी, तो उसमें उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग भी रखी है और कोविड की जितनी प्रिकॉशंस थी उसके साथ उन्होंने ओपन किया है। और इवन जब ये स्टूडेंट्स वहाँ ट्रैवल करेंगे तो उनको एक प्रोसीजर के थ्रू और एक प्रॉपर SOPs के थ्रू वहाँ पे उनको बिठाया जाएगा क्लासेस के अंदर, वो बैठेंगे वो, और एक सोशल डिस्टेंसिंग उनकी फॉलो की जा रही होगी और वो पूरी एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। सो इसमें पेरेंट्स को किसी तरह की कंसर्न होने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आफ्टर कोविड और इंशाल्लाह व्हेन थिंग्स आर फाइन, आपके जो स्टूडेंट होगा या आपके जो बच्चे होंगे वो सही तरह और एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर अपना पढ़ रहे होंगे। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग आफ्टर कोविड आपका क्या होने वाला है। सो आफ्टर कोविड भी चीजें वैसी रहेंगी नॉर्मल, सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके SOPs हैं उसको फॉलो किया जा रहा होगा। थैंक यू कैल्विन, थैंक यू Elise for taking out time for us and gave us brief information regarding INTI University and give us update about post COVID plans, give us update about scholarships and programs offered in INTI. Kindly give us the ending note. Kindly what side? Sorry. Yes, Miss Ili, please. No. Over to you, Tahir. I'm so sorry. I couldn't hear that properly. So sorry. Yes. First of all, to thanks to both of you, Miss Ili and Mr. Kevin, Mr. Saad, that you joined us today. It was very interactive session. बहुत अच्छा session रहा आज। स्पेशली मैं अपने व्यूवर्स का भी थैंक्स करना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया, इंक्वायरीज प्लेस की और जो देख रहे थे स्पेशली इंटर यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए स्पेशली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा कि मिस इली ने बताया, गाइडलाइन दी है रिलेटेड आइट से रिलेटेड, और वीज़ा कितना फास्ट ट्रैक है, अक्टूबर इनटेक आ रही है। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फ़ौरन से ज्वाइन कीजिए और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्लेस कर सकते हैं मिस्टर साद को। मिस्टर साद का नंबर है 034647473031। अपने फ़ौरन से डॉक्यूमेंट्स इस नंबर पर प्लेस कीजिए, आपका एनालिसिस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली मिस्टर साद आपकी ऑन स्पॉट एप्लीकेशन प्लेस करेंगे। इंटी यूनिवर्सिटी में अक्टूबर इनटेक के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटी यूनिवर्सिटी में जो कमिंग इनटेक्स आ रही हैं उसके लिए। और उसके अलावा स्पेशली जो ऑल पाकिस्तान से जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, वो भी malaysia@hrpakistan.com पे अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर फ़ौरन आपको कॉल की जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट ब्रीफ किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटी यूनिवर्सिटी में। अपना टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से अप्लाई कीजिए। जो अगर आप समझते हैं आपकी कोई भी कन्फ्यूजन सी, आई होप कि हमारे तमाम व्यूअर्स की जो वो कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। एडमिशन भी प्रोसेस हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं और इंशाल्लाह जल्द ही ट्रैवल भी करेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जी अपना टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से अप्लाई कीजिए 034647473031 अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए, या फिर malaysia@hrpakistan.com पर अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड कीजिए। तो आज का मेरा ये सेशन मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा।
once again to all of you, thanks that you join us today. और मैं अपने तमाम व्यूवर्स का once again thanks करना चाहूँगा. अपना ख्याल रखिएगा. अपना सेशन मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you. Thank you so much, everyone. Stay safe. Allah Hafiz. Bye-bye. Thank you.